વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારના દિવસે ભારે ઉત્સાહ અને સઘન સુરક્ષા વચ્ચે ઐતિહાસિક સાબરમતી ગાંધી આશ્રમથી દાંડી યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવી હતી। મોદીએ દાંડી કૂચને પ્રસ્થાન કરાવી દીધા બાદ મોટી સંખ્યામાં લોકો પગપાળા રવાના થયા હતા। રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાંથી લોકો તેમાં જોડાયા હતા। રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના વિચારોને દેશભરમાં પહોંચાડવાના હેતુથી તેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। 81 લોકો દાંડી કૂચમાં જોડાયા છે અને આ લોકો દ્વારા સાબરમતીથી દાંડી સુધી 365 કિલોમીટરની યાત્રા 21 દિવસમાં પૂર્ણ કરવા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મહાત્મા ગાંધી દ્વારા 12મી માર્ચ 1930ના રોજ અંગ્રેજો સામે મીઠાના કરને દૂર કરવા મીઠાનો સત્યાગ્રહ કરી સાબરમતી ગાંધી આશ્રમથી દાંડી સુધી 24 દિવસ યાત્રા કરી અંગ્રેજો સામેની લડાઈ જીતી હતી। ખાસ બાબત એ છે કે કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રહલાદ પટેલ પણ દાંડી કૂચ પર રવાના થયા હતા। ये यात्रा प्रारंभ हो गई है जो साबरमती से दांडी तक जाएगी, जो गुजरात का ग्रुप है उसे पूरा करेगा। 14 राज्यों से 91 लोग हैं जो 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। वो नाडियाड तक जाएंगे हम और उस यात्रा को पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के सबके अपने तरीके हैं। हम अपने प्राचीन स्वतंत्रता के आंदोलन के लोगों को उसमें याद करें और उससे प्रेरणा लें। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। उस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब 91 वर्ष बाद एक ताकतवर नेतृत्व देश के सामने है और हम दुनिया के सामने ये बता पाने के लिए समर्थ हैं कि अब हम याचक नहीं हैं, हम दाता हैं। और हमने वैक्सीन और दवाइयाँ देकर ये साबित कर दिया है। आने वाली पीढ़ी को इस जिम्मेदारी का एहसास हो। मुख्य उद्देश्य है कि एकजुटता की भावना, दूसरा आत्मनिर्भरता की भावना और तीसरा महात्मा गांधी जी के आदर्शों को सब युवाओं में प्रेरित करना, यही एक उद्देश्य है एकजुट भारत। देखिए, हम लोग पुरानी परंपरा से आए कि हमें भारत को सोने की चिड़िया बोला गया जाता है हमेशा। कभी सोने की खान नहीं रही, कभी चांदी और हीरे की खान नहीं रही। सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि उस समय हमारा जो व्यापार था वो बहुत उच्च स्तर पर था। वो व्यापार को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और हमारे इस भारत में पैसा आता था, इसलिए हम इसको सोने की चिड़िया बोलते थे। वही सोच है प्रधानमंत्री जी की कि अपने देश में बनाओ और इसे बाहर बेचो, ताकि हमारे GDP में भी सुधार हो और बाकी लोगों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो।